हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल मेडिको। मतलब ऑब्वियसली मैं पासवर्ड भूल गया था। सादिक भाई ने मुझे थोड़ा पासवर्ड याद दिलवा दिया चैनल का। बट आई एम बैक ऑन दिस चैनल एंड जब चलो दो डॉक्टर तो नहीं, एक डॉक्टर एंड वन टू भी डॉक्टर एक स्ट्रीम पे बैठे हो एंड दैट टू सम फुटबॉल फैनेटिक्स, मतलब पागल क्रेजी लोग अबाउट फुटबॉल, तो डिस्कशन तो तुम्हें पता ही क्या होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग द मैन ऑन योर स्क्रीन, डॉक्टर सादिक। मतलब कौन नहीं जानता इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में डॉक्टर सादिक को। वन ऑफ द बेस्ट पीपल यू विल एवर मीट, मोस्ट इंटेलेक्चुअल गाइस एंड ऑब्वियसली डॉक्टर है तो इंजरी रिलेटेड बात तो इनसे बेटर कौन ही तुम्हें बता सकता है। थैंक यू सादिक भैया। अरे थैंक यू दैट वाज अ इतना तो मुझे भी नहीं पता था मेरे इतना इंट्रोडक्शन हो सकता है। नहीं नहीं सादिक भैया, मच मोर डिजर्विंग है। इतने आप अपना चैनल नहीं बनाते तो मैंने सोचा मैं ही यूज कर लूँ इस अब हमारी नॉलेज को। लेट्स गेट ऑन टू दैट, टॉकिंग अबाउट द मोस्ट हीटेड अप टॉपिक इस टाइम पे। मतलब कौन इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। अर्लिंग हालैंड हैज मेड हिज मूव टू मैनचेस्टर सिटी, लेकिन एक चीज जो ज्यादा बात नहीं हो रही है बिकॉज वो सिटी आ गया है, इज द इंजरी रिकॉर्ड। इंजरीज के रिकॉर्ड, मतलब रियल मैड्रिड फैंस को ये तसल्ली दी गई है कि हम अर्लिंग हालैंड के परस्यू में इतना एक्टिवली नहीं गए बिकॉज हम उसकी इंजरीज को लेकर कंसर्न थे। पेरेस को प्रॉपर इंजरी की उसकी रिपोर्ट्स नहीं दी गई थी बाय हिम बाय हिज एजेंट एंड दैट इज द रीजन रियल मैड्रिड इतने एक्टिवली उसके पीछे नहीं गई। सो इज दैट इंजरी सो इम्पोर्टेंट इन हिज करियर कि इतना बड़ा वो मूव नहीं ले पाया, या फिर क्या उसके अराउंड जिस ये न्यूज बनाई जा रही है, इज इट जस्ट अ रूमर अराउंड सच अ बिग प्लेयर? उसी को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग सादिक भी जस्ट फैक्ट स्टेट कर देता हूँ जो सपोर्ट करते हैं टू द फैक्ट कि इंजरी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हालैंड्स करियर एंड दैट इज जस्ट स्टेटिंग इस सीजन उसने 100 दिन वेस्ट वेस्ट करे अप्रोक्सीमेटली। 100 दिन उसने नहीं खेला, पिच पे नहीं था, ही डिड नॉट ट्रेन एंड उसने काफी मैचेस भी मिस करे हैं इसकी वजह से। सो हाउ डू यू सी अर्लिंग हालैंड? जब मैं इंजरी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जब आप उसको पिच पे देखते हो, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Starting with, obviously he has an injury record, and as you mentioned, he's missed close to 100 days this season. यस। But then again, you should see he was injured in the past previous seasons also, but that was small injuries जो हर player को होती. So I wouldn't read that much into it, but yes, obviously seeing the type of player he is, he's a big, lanky forward who is not just staying inside the box. Yep. He's as adept at playing outside the box with that power, that change of direction. Because strikers usually tend to suffer lower limb and especially the foot kind of injuries a lot. क्योंकि उनका वही होता है, they have to have that sudden burst of movement and then change of direction, जिसपे या तो आपका नी जाता है या आपका एंकल जाता है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल इंजरीज में इशू ये होता है कि वंस दे हैपन इन योर बोन एंड इन योर स्ट्रक्चर, वो फिर क्या करता है, वो लिंगर ऑन करता है। बिकॉज द ओल्डर यू गेट, the more share and stress you put on it, आपको फिर मस्कुलरली उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, आपको अपनी स्पीड और पेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। So the important thing here would be how would the injuries bother Haaland, potentially bother Haaland in the future. वो तो 100% तो कोई नहीं कह सकता, but as medics and as part of the medical profession, obviously हमारा काम भी होता है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसे बताते हैं कि भाई this is the prognostic factors, मतलब Yep. ये आपके साथ हो सकता है, the conditions could go so far. तो उसको देखने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सी आवर फर्स्ट स्लाइड हियर कि हालैंड की इंजरीज हैं क्या और क्या क्या रही हैं। टॉकिंग अबाउट, अगर हम स्टार्ट करें 1920 वाले सीजन से, जो पहले इसका सैल्जबर्ग में सीजन चल रहा था, तो इसका वहां पे नी प्रॉब्लम्स थी, मस्कुलर इंजरीज थी, नी प्रॉब्लम्स अगेन कंसिस्टेंट रही हैं। टॉकिंग अबाउट जब से वो डॉर्टमंड आया, डॉर्टमंड में आते ही नी प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली चलती रही, टोन मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर प्रॉब्लम्स। इसमें यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हालैंड की जब भी इंजरी होती है ना, ही हैज नेवर बीन सो वोकल अबाउट इट कि कौन सी इंजरी उसको हो रही है। मतलब उसके मैनेजर ने इवन ही हैड टर्म्ड कि हालैंड इज अ प्लेयर हु रेजिस्ट टू गो फॉर एमआरआई स्कैन्स, टू गो फॉर सम अदर स्कैन्स एंड ही इज अ प्लेयर हु इज ऑलवेज इन पेन। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो पेन में ना हो। So is it something that he wants to hide so that his career flourishes, or do you think कि ये सिर्फ मतलब हवा में तीर मार रहे हैं and it is just to defame the player? See, if you calculate his average missed days, those are like, say roughly he has missed around 200 days in four seasons. Definitely, yeah. So 200 days अगर आप missed count करो over 4 years, so that is like close to 1200 में से 200 games. So that is not that much percentage wise if you compare to someone who is considered to be injury prone. Yeah. But no doubt he has had those injuries.
अब इंजरीज में हम देखें, he had a couple of major knee issues, but they were not major. He was out for only 10 to 20 days at the max. Yeah. With the knee issues, except that ligament injury. अब वो ligament कौन सी? I don't think it was a knee ligament. It was probably some other ligament. Yeah. So, if you consider that, so his knee and his structural issues are not as much. It is The more major muscular. issues जो, Yeah. yes, they are the muscular ones, and I do feel it is probably the hip flexor and those, क्योंकि एक दफा hip flexor में mention हो चुका है. 2020 इसी सीजन में हुआ है. इसी सीजन में हुआ स्टार्टिंग के मतलब फेज में. Exactly, दो हुए हैं. Yeah. तो हिप फ्लेक्सर इश्यूज जो होते हैं वो यूजुअली ये होते हैं कि आपकी मसल टेयर नहीं होती, वो नहीं होता, इट्स जस्ट दैट मसल हैज बीन स्ट्रेच्ड और आपको पेन हो रही है. तो जब आपको पेन हो रही होती है तो उसका मेन, यू आल्सो नो दैट, कि आप फिजियोथेरेपी, रेस्ट, रिलैक्सेशन से हील होता है. तो उसमें आपको सर्टेन डेज वेट करने पड़ते हैं. नाउ वन थिंग दैट मेनी पीपल आर नॉट कंसीडरिंग इज दैट हालैंड वाज लुकिंग फॉर अ मैसिव मूव. या मे बी द करियर डिफाइनिंग मूव, मतलब डेफिनेटली द करियर, मे बी क्या, definitely the career defining. Exactly. So for him, he could have taken that extra time to heal his injury better and to make sure that he does not get injured in the second half of the season. Yeah. Because if you see the issues, they occurred in the second half, November में, और फिर January के बाद उसने time लिया. So sometimes players tend to stay a bit longer, and also Dortmund had nothing to play for after January. They were out of the Champions League. They were, I think, out of the UEFA. I mean, they were out of the Europa as well. Yeah. And they were pretty much locked into the second or third position in the Bundesliga. हाँ, मतलब एक सीजन का फेट डिसाइड हो गया था. सीजन फेट डिसाइड हो गया था. इट वाज नथिंग कि वो एक प्रेशर आना है, यू हैव टू प्ले सो मेनी मैचेस बैक टू बैक. Exactly. Now the people who are saying, देखो, people will say I'm a Barca fan, I'm saying that, but Real Madrid, obviously वही वाली बात है, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले शेयर भी बोला था कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब. Real Madrid is trying to tell its people कि भाई हम हालैंड को नहीं लाए, इंजरी रिकॉर्ड था, ये था, ठीक है, he may be hiding, but we are talking out of what we have in front of us, ठीक है ना. Indeed. So the issue is कि इसने एक सीजन में 95 days मिस किया, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में he has missed 95 days. Yeah. अब मैं कैलेंडर ईयर भी नहीं कहूंगा, I'll say सितंबर से, if that is right to say. इस सितंबर से I would say till this May. आप गिन सकते हो, आप उसको माइनर, जब से इसके मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, that has been a calendar year. Yeah. ठीक है, तो ये missed a total of say 100 days approximately. और muscular problems, just to give an advice, I mean just to let people know, is के muscular problems can be settled down. क्योंकि muscular problems क्या होता है, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट. I would be more worried कि अगर हालैंड में स्ट्रक्चरल इशू होते हैं, यानी एंकल, नी, वो अगर ज्यादा जा रहा होता. He has some knee problems, but those are not major problems. He has missed 4 days, 10 days, उस तरीके से. So those are like knocks. If you have structural issues, तो आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाता है. और हालैंड जैसे प्लेयर के साथ who relies on his pace, his strength, his power, his physicality, that would have caused him an issue. क्योंकि या तो he would have had to change his style as a player, या he would have become a consistently injury prone person. Yeah. So talking about players like him, हमने पहले भी ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग प्लेयर्स ऑन देयर फॉर्म या कैसे खेलता था, बट ऐसे फिजिकलिटी वाले प्लेयर्स हु गो विद दिस डायमेंशन. मतलब हम इससे पहले जब हम बात कर रहे थे ऑफलाइन, आपने मुझे बताया वन प्लेयर यू रिलेट हिम टू इज शिवचेंको, वन प्लेयर वी कैन टॉक अबाउट इन दिस कन्वर्सेशन इज R9 रोनाल्डो. एंड उनके भी अगर हम इंजरी रिकॉर्ड उठाएं तो मैं चलो स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ, टॉकिंग अबाउट देयर इंजरी रिकॉर्ड्स एज वेल. सी, इनके इंजरी रिकॉर्ड में भी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी तुम्हें अर्ली स्टेजेस में दिखेगी. ऑलमोस्ट सेम टाइम मिस करा है उन्होंने, 44 days, 66 days इन द सेम ईयर, 2002 और 3 का सीजन. हां जी, there is another issue. Shevchenko's injury record keeps persisting. Why? Initially he had a muscle problem. Yeah. And then he had a tear in the abductor muscle जो कि छोटा सा था. Yeah. But his issue was knee injuries. Yeah. More of a structural change. Yeah. Yes. So that kept on bothering him. Now let's go to a player like Karim Benzema, because we don't regard Benzema as a power striker, but Benzema is also a power striker. Yeah. अगर हम इनिशियल देखें, before moving on to Real Madrid, या फिर when he started at Lyon, he started, don't look at the number of games, because games matter करते हैं कि उस वक्त सीजन में गेम्स हो रहे हो कि नहीं. It matters more on the days you miss. इसके भी अगर आप शुरू के देखो, 11-12 से देखना शुरू करो, 8-9 में इसको कुछ इशू हुए थे. उसके बाद he started having hamstring injuries
adductor is the hamstring का ही part बन जाता है muscle. Yeah. Adductor, then he had one MCL injury जो कि आपको हो जाता है, then thigh muscle, back trouble, thigh problems. So these issues persisted with him, but they were never issues which bothered him too much. उसके बाद आप देखो इसके issues कहाँ खत्म हुए. He still had these issues. अभी भी देखो hamstring injury. He missed those 20-21 days. Consistently Benzema was missing, but क्या है? Hamstring injuries, rest relaxation, 2-3 गेम आपके गए and you play. Benzema की injuries क्यों इतनी हमें वो नहीं लगती? Because Benzema का भी scenario was similar to what probably Haaland will have at City is कि he has a deep squad with him. Yeah. तो Before getting Benzema on, को rest कि हम फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि इज सिटी द परफेक्ट स्क्वाड फॉर हिम. लेट्स टॉक अबाउट कि क्या एक्चुअली हम ज्यादा ही डिस्कस कर रहे हैं, इज इट द सोशल मीडिया इफेक्ट? बिकॉज अब ये शिवचेंको या रोनाल्डो वाला टाइम्स नहीं है कि तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, राइट? एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द 2020s के एरा में आ चुके हैं हम, वेयर ACL इंजरी जैसे आपने मुझे बताया कैन बी क्योर्ड इन 6 months, एंड उस टाइम पे इट्स एंडेड करियर्स, एंड इट हैज एंडेड मेनी करियर्स. टॉकिंग अबाउट द मेडिकल, yeah, across sports, not just in the game of football, it has. So is that just a मतलब what you can say a rumor going on, या फिर इसके अराउंड एक सिचुएशन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं just to put added pressure on Erling Haaland? See, it's a thing, पता है क्या, like obviously when you add a player the quality of Erling Haaland to Manchester City, rival fans do have a issue के भाई ये तो मतलब from a talent point of view this has to be an illegal kind of a move if you add a player like him. पिछला मैच देखा, KDB 4 गोल मारा, KDB हालैंड को कह रहा तू आजा असिस्ट देने के लिए, गोल मैं मार दूंगा. मतलब it was like that. उससे पहले गैब्रियल हेसूस 4 गोल मार रहा है. And like सादिक भाई मैं बताऊं एक चीज इसमें भी क्या है कि जब अब तुम एक प्लेयर की ट्रांसफर मूव के बारे में बात कर रहे होते हो ना, जिस क्लब में जा रहा है दे विल ऑल फाइंड द पॉजिटिव्स, बाकी सब विल ट्राई टू फाइंड द नेगेटिव्स. लेकिन आप स्ट्राइकर के बारे में क्या ढूंढते हो? गोल्स नहीं मार पाता, कंसिस्टेंसी नहीं है, हालांकि सर वो प्रॉब्लम नहीं है. आप उसमें क्या ढूंढते हो? प्रीमियर लीग तो बहुत फिजिकल गेम है, तुम फिजिकलिटी नहीं होगी. हालैंड की तुम वो डिस्कशन नहीं कर सकते, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल प्लेयर्स जो तुम फेस करोगे. उसके पास एक ऐसे सिस्टम में फिट नहीं करता, सिस्टम में भी फिट करेगा वो. एक डिस्कशन क्या हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते लोग ये करें अरे ये तो टारगेट मैन है, पेप टारगेट मैन. आप डॉर्टमंड के गेम्स जाके देखो, हालैंड के साथ जितने मिडफील्डर्स खेलते हैं वो सबसे ज्यादा गोल मारते हैं. हाँ, बेलिंगम, सांचो, रेना, ब्रांड, इसकी वजह से हम वापस कॉन्वर्सेशन में आए तो इट इज जस्ट आप सोशल मीडिया एरा में हम एंटर कर चुके हैं, तो हम बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं एंड उसकी इंजरी रिकॉर्ड को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं. आई थिंक हम दोनों का सेम वर्डिक्ट है. सो टॉकिंग अबाउट कि हमने ये चीज एग्री करी कि इसको इंजरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इफ ही इज रोटेटेड वेल he can give you a very good season consistently, मतलब good seasons देता रहेगा consistently, and that is possible in a squad like City. Yeah, एक चीज और दिखानी है. हाँ जी, हमने दोनों रोनाल्डोस भी डाले, उनका जरा दिखा. पहले R9 का दिखा बिकॉज R9 इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड. yeah, देखो R9 का क्या था, उसका पटेला रप्चर हो गया. अगर people are not grossed out by watching that image, there is a video on YouTube showing when he ये जो 99-2000 में जो ये 523 डेज के लिए गया था ना, अगर यू आर नॉट ग्रोस्ड आउट बाय सच थिंग्स, वो वाली उसकी इंजरी जाके वीडियो देख लो, यू विल बी मतलब डेफिनेटली आप समझ जाओगे उस बेचारे के साथ क्या हुआ था. तो दैट वाज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, मतलब उसकी नींव खत्म हो गई, उसका घुटना टूट गया. या इन सिंपल शब्द वो घुटना टूट गया. क्योंकि R9 उतना ही फिजिकल स्ट्राइकर एज आई ऑलवेज से, मतलब द सिमिलर फिजिकल प्रोफाइल का प्लेयर जो है वो आपको रोनाल्डो R9 भी मिलता है, लेकिन हिज इशू वाज स्ट्रक्चरल इश्यूज. Now let's go to Cristiano Ronaldo that many people do not understand. He is the epitome of health and fitness. Yeah. Go to his early days when he came to Manchester United. Ankle issues consistently तुम देखोगे, consistently. And these are the amazing part about Cristiano here is he had structural issues and he sorted them out. Yeah. How? By overcompensating with his muscular endurance. So even if you have certain, तो ये इस बात की निशानी है, even if you have certain structural issues, and Cristiano was the fast, quick player, मतलब his physicality, अगर आप बोलो लेफ्ट विंग से जब वो मूव इन करता था, he was a powerful player. He was a fast player and he was a powerful player at the same time. So the same issue here, he had ankle issues, but those ankle issues he compensated
or rather overcompensated for them with his muscular endurance and his muscular development. और आज के दौर में, this is you are talking about आज से 14-15 साल पहले. Yeah. Today, with a team like Manchester City, who have the best medical staff in the world available to them, I don't think Erling Haaland will have, as a United fan, if Haaland doesn't work out at City, nothing like it. But not basis on the injury. कोई नहीं चाहता कि एक player injured हो and उसकी वजह से result ना आए. Exactly. एक तो not on the basis of that, and दूसरा, knowing my medical background, yes, he will miss games, no doubt. कल को कोई आके बोल देगा, अरे सादिक भाई आप बोले थे तो कुछ नहीं करेगा, इसके तो 10 गेम मिस कर दी. Haaland will not play your 50-60 games in a season. But that's where a team like Manchester City comes into the picture, कि जहां पे उनकी स्क्वाड में इतनी डेप्थ है कि Haaland, if he plays the 35-40 games a season, I would say 35 important matches in a season, make City win those. The rest 15 games, he could be substituted, he could be given rest, he could be given time off. And muscular injuries के लिए एक और एक चीज ये होती है कि if Haaland has played 3 games in a month, the 4th game he gets a rest, he's not even on the bench. Yeah. And that is a luxury that a team like Manchester City can afford. Definitely. I'm not saying Real Madrid cannot afford that, or Barcelona for that matter cannot afford that. Over the course, probably शायद Barcelona, Real Madrid already has that depth. Yeah. Especially if they have a Karim Benzema and they can take a Karim Benzema off. So I would think Real Madrid could also have gone for Erling Haaland. So if you see the medical history, muscular issues more than structural issues, you see the squad he's going to, Manchester City, where they have enough depth and they have the medical staff to cater to his needs. I think he would be pretty solid. And touch wood, आप देख सकते हो एक अच्छा medical staff क्या कर सकता है in the case of say Ousmane Dembele. Yeah. और वो within months देखा तुमने, within months change होते देखा है. एक महीने पहले उसको बोल दिया कि वो खेलेगा नहीं. Exactly, उसने उसको अपना dedicated medical staff दिया, सब किया, and you see there's a change in the player. मतलब I was worried कि वो पिछले कुछ when he started playing under Xavi, वो press कर रहा था, tackles कर रहा था, मैं बोला भाई तू tackle नहीं कर, अभी injured हो जाएगा. But उसको वो confidence था ना, वो वही उस medical team का role आता था उसमें. बिल्कुल. तो with all of that in mind, I think it won't be that he will have. So far, it looks like it doesn't seem injuries would be an issue. Yes, Haaland will not play every match of the season. He will not be that fifth. क्योंकि आप देखो, अभी लोग बात करते हैं endurance के मामले में about Karim Benzema. लोग बात करते हैं about Cristiano Ronaldo. But you can see कि initially in their initial days also, when they were, क्योंकि क्या होता है when you are young, you are very enthusiastic. Your game is not as refined, as developed. You try to attempt a whole lot more things, overdo things exactly. तो वो आपका आहिस्ते आहिस्ते with time, Haaland will mature. He will stop doing that. So maybe by the time he's 27, 28, you will find him playing longer stretches of the season. Initial days, yes, he has to be catered in that particular way. He will not be forced into that style, not forced into that. And the other thing is, City's play style also helps him. Yeah. City does not play on the counter where you have to rush in. Yeah. City does not play a high press. They play a high press, but it's not a heavy metal kind of a press. Yeah. It's more of an instinctive press. So that pressure of sudden movement, that constant up and down is not there on him. Yeah. So all these factors, I feel that at Manchester City, Erling Haaland should not have injury issues. Okay, barring कि पता चला next season वो जाए. Yeah. और फिर कोई structural injury हो जाए. हाँ, structural injury हो जाए. Talking about his muscular injury and record, अभी तक जो है, what we can diagnose is this only. Exactly. अभी तक जो मेरे पास वो कहते हैं ना एक मरीज की हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स है. हिस्ट्री टेकिंग है, मैं जो करी है. बोल सकता हूँ कि वो injuries, he will have on and off injuries, but it won't be an issue that will hamper his career. Yeah. At City or his effectiveness at City. Yeah. So I think you have heard from the expert himself. उन्होंने अपनी बता दिया है ओपिनियन, and I thought कि मतलब सब Haaland to City डिस्कस कर रहे हैं, गेम स्टाइल फॉर्मेशन सब डिस्कस कर रहे हैं, but this is also a topic that should be discussed. उसकी इंजरीज के अराउंड रियल मैड्रिड फैंस को सुनना था, सिटी फैंस को सुनना था. I think we have covered everything that we have. Still, if you have questions, put down in the comment section below. Sadiq bhai, I'm sure will visit us again and we will discuss the questions with him. We will get your answers. Live stream भी करेंगे. So till the time, do not forget to like, comment and share. अब channel regular हो जाएगा. I know that fact. Sadiq bhai से मैं डांट खा चुका हूँ अब.
तुम टेंशन मत लो, हो जाएगी, things will be online. Thank you so much Sadiq bhai, thank you so much for the words as always. Thank you so much. And with this, do not forget to like and comment about the video. Thank you guys.